वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन फंडेड दहशतगर्दी का सामना है। फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान BLA और TTP अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में उन्होंने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करे। उन्होंने भारत में नफरत पर मबनी हिंदुत्व नज़रिए को पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. I believe a man killed in New York is a man killed in Lahore, a man killed in Islamabad is a man killed in London. It's a global village. So I think unless and until terrorism is defeated hands down, this world will not be a peaceful place to live. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan. We expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इजराइल की फ़लस्तीन के खिलाफ मुहिम शर्मनाक करार दे दी। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हिमायत करता है। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात पर कहा कि गजा में जंग बंदी की नई शमा रोशन हुई। Ladies and gentlemen, Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. We are further grateful for President Trump's timely initiative to invite Arab Islamic states 3 days ago here in this building for a consultative session at the United Nations. And I think, and I hope and pray to God that it has rekindled hope for a ceasefire in the nearest future, for which the credit must again be attributed to President Trump